See, many of you have joined. We can start. Can someone confirm if my screen is visible? Yeah. This one, right? You see the Azure portal? Yes. Okay, great. Right. So I was saying, guys, that we cannot cover each and everything. Otherwise, this class will go for years. Right? हर छोटा ऑप्शन नहीं कवर हो सकता. You guys will have to work towards it. थोड़ा बहुत आप लोगों को भी इसमें प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी. I will be giving you tasks and questions, but when you practice yourself, you come up with questions, then it will be easier for you to understand things. First question, I hope the availability set is clear, right? Now, the question comes, can I remove a machine which I have already added to availability set? This is my machine and this is under availability set. Can I remove a machine? I don't want this machine to be in availability set. Not Can I sure, remove? but there should be the option for remove the availability zones. You cannot actually. You cannot, Okay. right? Let's say this is the machine which I have created, or this machine is in a different, this one you say, in different resource group. तो ये तो ऐसे ही add नहीं होगी. Let me create one machine in the same resource group. I'm not adding that machine to my fault domain, right? We'll just create that machine and then we'll see if we get an option to add that machine to fault domain or to availability set. Or I'll keep it this as a homework. You guys come up with the answer. I mean, I can show it to you right now, but okay, you do your research and let me know. Not now. Anyone can post the answer in the group, but do not just put any random answer, guys. Yes or no नहीं. उसके पीछे बैकिंग में माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल चाहिए. That can I add a machine, an existing machine? I'm not talking about adding a machine to availability set. वो तो मैं definitely कर सकता हूँ, right? ऐसा नहीं है कि मुझको availability set बनाना है और वो availability set बनाते वक्त ही पूरे machine एक साथ decide करने. No, that is not the case. I can create the availability set and then I can decide आराम से उसमें बाद में while creating other machines. I'm creating machine number 1, put it in the availability set. Machine number 2 दूसरे दिन बनाऊंगा, use the same availability set, which we did, right? अभी हमने availability set कल बनाया था, but this machine we created today and we were able to add this machine to availability set. But while creating, my question is, I have already a machine which I have not added to availability zone. मैंने machine create कर ली, उसको add नहीं किया. Can I add that machine to availability set? So the question is, can I add an existing machine to availability set? Is this clear, guys? The question? Yeah. Existing machine add to Yes. So come up with availability the set. answer and make sure you have the backup of Microsoft article. If you can, what are the steps? How's the step? If not, how? वर्क अराउंड की बात नहीं कर रहे हैं. मतलब इफ जहां भी आंसर नहीं होता है ना, उसके वर्क अराउंड हमेशा होते हैं कि यार उस मशीन को आप डिलीट कर दो, नया मशीन बना लो, उसका कैप्चर कर लो, उसका बैकअप लेके न्यू मशीन बना लो. नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क अराउंड्स. डू वी हैव अ सिंपल ऑप्शन लाइक इसमें कैसे होता है बनाते वक्त अवेलेबिलिटी जोन में ऐड करने का ऑप्शन, अवेलेबिलिटी सेट में ऐड करने का ऑप्शन? डू वी हैव दैट और नॉट? सिंपल, बस उतना ही आंसर चाहिए. सो वी आर डन विद आवर टॉपिक अवेलेबिलिटी सेट, गाइस. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू हैव हियर? No. No. Okay. Let's see. Someone. Razak bhai, what happened to your Azure cannot add an existing virtual machine to an availability set. Azure has provision. Fine. If you already got it, it's okay. You can send it to every. Yes, you have sent it to everyone, I guess. So I think you guys already got the answer, right? जहां पर आपकी machine already बनी हुई है, so you cannot add that machine to availability set, right? And I told you कि resource group, while sharing the resources, as in resource use करने में, for example, if I am using same network दो machines के लिए, इस machine में के लिए एक network मैंने बनाया है, वही network मुझको इस machine के लिए use करना है जो temp resource group में है. So there is no obligation कि नहीं use कर सकता हूं मैं. As far as I have access on both the resource groups, तो मैं वो resource को use कर सकता हूं, चाहे वो कोई भी resource हो. Storage across the resource group यूज हो सकता है, नेटवर्क यूज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. बट
तो अवेलेबिलिटी सेट इज द ओनली थिंग जहां पर रिसोर्स ग्रुप का भी एक कंपल्शन है. I cannot have a machine in UT-Kloud resource group and use the availability set which is in temp group. This is the only exception I know of. और भी होंगे बट बहुत रेयर एक्सेप्शन है जहां पर रिसोर्स ग्रुप लेवल पे डिवाइड कर रखा है. अदरवाइज रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग, बस एक लॉजिकल ग्रुप है. एज फार एज यू हैव एक्सेस, गाइस अंडरस्टैंड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. आप बोलेगे मुझको इसका नेटवर्क, सोहेल यू सेड इसका नेटवर्क यूज होता है. अच्छा ये होता है, बट यू विल से कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं because maybe you don't have access on this resource group. So I'm being very clear, as far as you have access on both the resource groups, you can use resources to each other's resource group. However, this is an exception. ये वाला आप नहीं यूज कर सकते हो. अगर आपका अवेलेबिलिटी सेट इसमें है, टेम्प रिसोर्स ग्रुप में है, तो आपके सारे सर्वर टेम्प रिसोर्स ग्रुप में ही बनेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टेस्टिंग मशीन नहीं बन सकती ना इसके अंदर, लेकिन नहीं तो बना सकते ना हम लोग टेम्प Yes, रिसोर्स yes. ग्रुप में. Yes, you can definitely. टेम्प रिसोर्स ग्रुप में बना सकते हो. I'm saying कि if I create a new virtual machine in this UT-Kloud resource group and try to use the availability set which is here. Let's check. पता नहीं कुछ change हो गया हो. I have not checked that from long time. Let's check this clearly. ठीक है. So I'm going to use some other resource group except for temp वाला. I'll give machine name. I have to make sure that I use the same region. This is very region specific, guys. वो आएंगे हम लोग region specific क्या होता है. And then I select availability set. Now look at this. I'm not able to see any availability set here because I have selected a different resource group. And the moment I change the resource group, temp resource group, यहाँ पर दिख रहा है. And being an owner, I have equal access, ownership access है मुझको सारे resource group पे सब कुछ. So I have access still. The moment I change the resource group, I don't see that availability set. And this is only with availability set, guys. Only with availability set. इसके आगे के जो ऑप्शन है ना, एग्जाम्पल नेटवर्किंग, इस वाले में आई कैन क्रिएट अ न्यू नेटवर्क और आई कैन यूज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो दूसरे रिसोर्स ग्रुप में भी पड़ा, वो आई कैन यूज दैट ऑल्सो. देखो यहां पर आपको दिखेगा टेम्प का जो रिसोर्स ग्रुप है ना, वो मुझको यहां पर दिख रहा है. सॉरी, टेम्प का जो नेटवर्क है वो यहां पर दिख रहा है. सो दिस इज ओनली फॉर अवेलेबिलिटी सेट. डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेटवर्क, वो वाले उस पर आते हैं हम लोग. अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली फॉर अवेलेबिलिटी सेट. वन ऑफ द कंडीशन इज दैट योर रिसोर्स ग्रुप शुड बी सेम. इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कभी कभार. इज दिस क्लियर? और ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है कभी भी. दे विल नॉट गोइंग टू सर्व यू अ प्लेटर. इतना इजी क्वेश्चन नहीं करने देने वाला है कोई भी. दे विल गिव यू a scenario based question that we have three resources, three machines for this application in resource group A, and now my engineer is trying to deploy a new machine in from resource group B and is trying to add that machine to availability set, but for some reason I'm not able to see that availability set. What troubleshooting steps would you do? इस तरह से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया रिसोर्स ग्रुप ए और रिसोर्स ग्रुप बी. आपको वहीं पर समझ में आ जाना चाहिए दैट दीज आर टू डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप्स और अवेलेबिलिटी सेट अक्रॉस द रिसोर्स ग्रुप यूज नहीं होता है. इज इट क्लियर गाइस? यस, नो, मे बी एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नहीं समझ में आया? व्हाट इज इट? Got it. गॉट इट? ग्रेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, ये सब आपने एक्सप्लेन कर दिया. बीइंग एन आर्किटेक्ट आपने क्लाइंट को ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि आपके 900 रैक से आपने 300 में ये कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे होगा वैसे होगा. दिस इज हाउ फैंसी आर अवेलेबिलिटी सेट इज. अज्योर का अवेलेबिलिटी सेट ऐसा है, ये है वो है. क्लाइंट सेज ओके फाइन, आई एम हैप्पी टू पे फॉर 9 मशीन्स बट मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए. बट क्लाइंट सेज वेट वेट अ मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन. ये 300 रैक्स, ये 300 रैक्स और ये 300 रैक्स, वेयर आर दे? आई से देयर आर इन वन बिल्डिंग. लेट्स से पुणे के डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, पुणे के डेटा सेंटर की हम बात कर रहे हैं. एंड दे आर सेइंग कि ये कहां पर है सारे रैक. आई एम सेइंग इनका डेटा सेंटर है खराड़ी में. दो वी डोंट नो द लोकेशन, Azure doesn't declare that. We are just taking example. Most of the crowd is from Pune. They will understand. You guys can relate it from your city's corner, etc. Just to understand. So I'm saying one of the corners of Pune, which is let's say Hinjewadi. I'm saying there's one data center in Hinjewadi. उसमें ये 900 racks है जिसको इन्होंने डिवाइड कर रखा है 300 racks है. Client says वो ठीक है. What if that building itself is down? As in demolish नहीं.
उस पूरे एरिया का ही तीनों के तीनों या चारों के चारों फ्लड आ गया उस एरिया में, हिंजवड़ी में फ्लड आ गया, गॉड फॉरबिड हिंजवड़ी में फ्लड आ गया, तो आपके जितने भी आईएसपी है, जितने भी पावर सप्लायर है, एंड जितने भी वहां पर ये है आपके पावर सप्लायर्स आईएसपी एक्सेट्रा, वो सब के सब डाउन हो जाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ योर फॉल्ट डोमेन, ये सब जो आपने बनाया है, विल माई एप्लीकेशन अप एंड रनिंग? व्हाट डू यू थिंक, ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर अगर डाउन है, विल इट वर्क? No. No. नो। माय क्लाइंट सेज भाई मेरा एप्लीकेशन इज वेरी क्रूशियल, माय एप्लीकेशन शुड वर्क। The next option we have then, it's called availability zone, right? Availability zone is the next option of availability set. Availability set में आप सिर्फ एक डेटा सेंटर में आपने वहां पर उसको डिवाइड कर रखा था अलग अलग रैक को, so that is a data center level redundancy you're getting. But if something goes wrong, something happens to that particular area, to that data center, वहां पर फ्लड आ गया, वहां पर अर्थक्वेक आ गया, वहां पर कुछ भी हो गया, एंड फॉर एग्जांपल यूक्रेन लाइक कंडीशन, गॉड फॉरबिड ऐसा किसी कंट्री में हो, और यूक्रेन में जो है वहां पर पूरा का पूरा कोई एक डेटा सेंटर ब्लास्ट हो गया in terms of war, ठीक है? Is your application working? No, it is not. Then what do you want to do? How would you tackle that? So the next option is availability zone. Now what is availability zone? Come here and we'll read about it. This is your availability zone, guys. Availability zone, first thing, and it is very crucial thing to remember, not all regions will have availability zone feature. Is it clear to everyone? All regions will definitely have availability set, but not all regions will have availability zone feature. There are limited zones, limited regions जहां पर availability zone मिलेगा. Not every region will have availability zone. तो अगर आपके application को availability zone जैसा redundancy चाहिए, then you will have to select one of those regions. You cannot say कि मुझको पुणे ही चाहिए और उसमें availability zone चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा. राइट, दैट लिस्ट यू कैन ऑलवेज चेक. वो जो मैप मैंने बताया था, आई कैन शेयर द लिंक, और उस पर आपको दिया है कि किस रीजन में. नो वन विल आस्क यू द क्वेश्चन कि किस रीजन में है किस में नहीं है, राइट? नो वन विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, बट दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो that it is not available in every region. There are multiple regions, there are several regions जहां पर availability zone नहीं है. Now what is availability zone? Availability zone is nothing, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक डेटा सेंटर वगैरह, बस उसी तरह के वो मल्टीपल डेटा सेंटर रखते हैं किसी एक रीजन में. मिनिमम 3 वी हैव सीन. तो लेट्स से पुणे रीजन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इनका एक डेटा सेंटर होगा हिंजेवड़ी में, एक होगा आपका फुरसुंगी में, एंड वन समवेयर इन थर्ड कॉर्नर ऑफ लेट्स से मगरपट्टा. दो मगरपट्टा और फुरसुंगी काफी पास है, इतने पास नहीं होते हैं, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. और सिटी के कोई 3 कॉर्नर आप समझ लो, दे विल हैव दैट 3 डेटा सेंटर्स इन वन सिटी, 3 डेटा सेंटर्स. वो जो अवेलेबिलिटी सेट जहां पर हम ले रहे हैं ना, राइट, जहां पर अवेलेबिलिटी सेट अवेलेबिलिटी जोन नहीं है एंड वी ओनली हैव अवेलेबिलिटी सेट, तो देयर दे विल हैव ओनली वन डेटा सेंटर. एक ही रीजन है, एक ही डेटा सेंटर है, दिस इज देयर रीजन. But where they are claiming that we have availability zone feature, which means in this whole region, this is let's say Pune region, or it's central India, I guess, right? In terms of Azure, central India region, यहाँ पर इनके एक ही सिटी में जो है मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो गए, एंड एक सर्टन डिस्टेंस होता है. अर्लियर आई थिंक इट वाज, आई कांट रिकॉल द नंबर, बट एक सर्टन डिस्टेंस होता है, इतने डिस्टेंस पे ही होता है. ऐसे नहीं होगा दैट one is at the airport and another one is at the Phoenix. इतने पास में डेटा सेंटर नहीं है, because both areas are same, right? And both can get impacted at the same time. तो definitely ऐसा नहीं होगा कि सेम चीज से दोनों एरियाज impacted हो. So let's say if this is their data center 1 in Hinjewadi, this is their data center 2 in Fursungi, and this is their data center 3 somewhere in the other corner of the city. ठीक है, somewhere in let's say Vagoli. Now these are 3 different corners of the city. Same method सबको same जो हमने apply पढ़ा था availability set में same apply होगा यहाँ पर. The moment you select availability set, your first machine will be deployed here. Second machine जब आप जाओगे, second machine यहाँ पर deploy होगी, third machine यहाँ पर deploy होगी, fourth machine यहाँ पर deploy होगी, fifth machine यहाँ पर deploy होगी, sixth machine यहाँ पर deploy होगी, seventh यहाँ पर deploy होगी. So now imagine I have 7 machine for one application.
and now there is a flood like situation. ठीक है, इसके अंदर अगेन रैक वगैरह सब कुछ सेम है, इसके अंदर अवेलेबिलिटी सेट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ बेटर रिडंडेंसी। ठीक है, तो अब ये किसी भी रैक में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, सेम रैक में तीनों भी सर्वर चले जाए, इट डजंट मैटर, उस दैट डजंट बॉदर अस नाउ। But I have 7 servers. Now imagine the data center which is in Hinchewadi due to flood situation or due to some earthquake. This whole data center is down. Is my application working now? Yeah. Yes, it is working, right? Because I have 2 servers here, 2 servers here. सेम ये अगर अवेलेबिलिटी सेट में होता और ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन होता, will my application work? It won't. Now imagine with this availability zone 1, availability zone 3 is also down. Is my application working? Yes. Simple. बस इतना ही है availability zone. I'll open the portal and show it to you. But is the concept clear, guys? Yes. Yes. Which one do you think is more useful? या ज्यादा redundancy किसमें मिल रही है हम लोगों को? Zone अवेलेबिलिटी में. जोन में। But कुछ limitations है availability zone के. What do you think? It comes with a condition. What is पर्टिकुलर that? रीजन में ही अवेलेबल है अवेलेबिलिटी जोन से Exactly. Exactly. सारे regions में available नहीं है, right? So let me delete all these machines. Now, why did I create a temp resource group, guys? Now imagine I have to create delete all these, or let it be. I delete them later. If you guys have any questions, we can come up with that. Okay, let me create a machine here. Okay, this is the machine I'm deploying, and now I have decided that I want to go with availability zone option. I've selected East US. I have availability zone. Okay, I select South Central. I have, look at this, availability zone I have. Okay, West US. I think US के most of the regions में होगा. I still have that. Europe, great. I still have that. Brazil, I still have that. Great. So this one we can check which region doesn't have availability zone. Great. We can see it almost in every region, but still there are regions जहाँ पर नहीं है वो. Can someone quickly Google which region doesn't have availability zone? Check African countries. Here it is. Fine. It's okay. I got it. Look at this. South Korea, right? It doesn't have availability zone. So if my application has some you can say bounding from government or etc. Let's say as an application owner from South Korea, he wants to use redundancy on his application, and he says that I have instructions from government that I cannot have my server out of South Korea region. Can you offer him availability zone? No. No, we can provide availability set option. Availability set, right? Okay, so let's take East US2 again. East US or US2, anything will do. Here we have availability zone. Okay, self-selected zone or Azure selected zone. By the way, wherever you see this preview option, which means it is a newly included feature. ये अभी जो है actual में production environment में नहीं दिखेगा. Being a trainer, I see this. You may see this, you may not see this. आप लोगों के free trial में ये दिखेगा या नहीं दिखेगा. But preview feature को we will not discuss it here because by the time it goes live, इसमें बहुत सारे changes हो जाते हैं. So we'll stick to this one. Self-selected zone. If I select zone 1, zone 2, and zone 3. ठीक है? Now, this is going to create 3 machines at the time. अभी ये immediately 3 machines create कर देगा.
3 मशीन क्रिएट करेगा, उसके नाम के आगे 1 2 वगैरह ऐसे कुछ लगा देगा। बट इफ आई से कि नहीं मैं बाद में करता हूँ खुद से, यू कैन डू दैट ऑल्सो। Zone 1 में एक मशीन बना लो आप यहाँ पर, और लेट्स क्रिएट 3 machines at a time first. I may have to delete all machines, let's say. And why do I have to do that? That I will explain. Today we are going to talk about quota as well. What is quota? Very, very small topic, but very important. Now, if you guys remember, I told you that we are learning these topics in isolation, right? But they are not useful in isolation. Just if you use availability set, your application, you will not be able to utilize it properly. Why? In availability set, or for that matter, availability zone also, what are we doing, guys? We are creating multiple machines, और इन सब पे आपको एक एप्लीकेशन होस्ट करना है. So are you guys going to give multiple IP addresses to your client कि यार instead of facebook.com आप IP एड्रेस से यूज करना शुरू कर दो क्योंकि मेरे पास उसके 50 सर्वर है, तो 50 IP एड्रेस मैंने दे दिए. No, that is not going to happen, right? You will have to give one point of contact to your client कि क्लाइंट को तो बस facebook.com ये करना है, उसके पीछे इन सर्वर्स पे वो कैसे राउट होगा, ये सब होगा. That we are going to see later. So we are going to learn them in isolation, like availability set, availability zone, और एक दो ऑप्शन है availability के. We are going to learn them and then उनको combine करके how to utilize it, उनके फ्रंट पे क्या सर्विस लगेगी. That is by the way called load balancer, but we'll see that later. It's not now, अभी टॉपिक नहीं है वो. बट जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ये इनको अलग अलग यूटिलाइज करके कोई फायदा नहीं है. बिकॉज यू, इट्स ओके, यू हैव 3 मशीन्स, बट अब ये 3 मशीन्स को आप आपके यूजर्स को दोगे कैसे? और चलो अगर आपकी सिर्फ 3 है, आपने तीनों आईपी दे भी दिया, आपके यूजर्स इतने लॉयल है दैट दे आर यूजिंग ओनली योर सर्विसेज विथ आईपी एज वेल. बट इफ आई गिव इंडिविजुअल सर्वर्स आईपी, देन अगेन इट इज नॉट हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन, बिकॉज एक 50 यूजर के पास सिर्फ इसका आईपी है. And if this server is down, वो 50 यूजर्स यूज नहीं कर पा रहे, सो इट इज नॉट हाईली अवेलेबल फॉर देम. 50 यूजर्स के पास इसका आईपी है, दे आर नॉट एबल टू यूज इट. सो दैट इज नॉट द सेटअप विच वी वांट कि तीनों सर्वर को मिला के अगर 150 यूजर्स हैं, इफ देयर आर 150 यूजर्स, then I should have only single IP with all of them, and they should use only single IP, and they should not even come to know which server is down, which is up. For them, there should be one single interface, right? So that we can achieve using load balancer. इन सबका एक सिंगल इंटरफेस होना चाहिए फॉर यूजर्स आर कमिंग फ्रॉम हियर. उसके बाद ये डिवाइड कैसा होता है ट्रैफिक, यूजर्स शुड नॉट नो अबाउट दिस. इसमें से कोई सर्वर डाउन होता है तो वहां ट्रैफिक जाना बंद हो जाना चाहिए, यहाँ पर ट्रैफिक आना चाहिए. एवरीथिंग विल बी डन एट द लोड बैलेंसर लेवल. We'll see that in detail. That is a topic in our course, so don't worry about it. But while these were being created, so I just thought of letting you know कि सिर्फ मशीन बना देने से कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, hence I told you that we are learning these topics in isolation, but we'll have to combine them to have the ultimate solution. Okay, now my machines are ready. If I go ahead and check my virtual machines, look at this guy. 1 2 3. This is added by Azure, 1 and 2 and 3. So now if something goes wrong to my zone 1, I still have a machine in zone 2. If something goes wrong to zone 2, I still have a machine in zone 3. Is this clear to everyone, guys? What is availability zone? Any doubts, any questions, guys? Yes, no, maybe. In this situation, if zone 1 is down, the IP address will move to the No, next no. availability.
No, don't worry, we are not, we'll cover that. Let's not get confused. How the IP etc will work, हमने अभी नेटवर्किंग शुरू ही नहीं किया, राइट? Right. आते हैं इसको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे बहुत. पे Is दिक्कत this इसीलिए clear? पूछा. Is this clear now? जो हम पढ़ रहे हैं, is this clear guys? कि availability Yes. set क्या है, availability zone क्या है? Any Yeah, questions? no. No questions guys? I'm surprised how come you guys don't have any questions. I know इतना easily clear नहीं होता. If you don't have question, let me ask you one. Can I add an existing server or a new server to existing availability zone? If you don't have, then obviously I have a question. Can I do that? First question, can I add a new machine to availability zone? या जो मैंने एक बार बना दी बस वही होगी. Second question, can I add an existing machine to availability zone? I think we should be able to add a new machine on availability zone. Let's say. But instead of thinking, guys, we should have asked this question. Okay, now, first let me check the availability zone which we created. By the way, availability zone में हमको कुछ create नहीं करना पड़ता है, ठीक है? बस इतना देख लो, ECS2 में है और इसका और उसका नेटवर्क सेम हो, so that should be enough for us. Yes, of course we can add. And इसमें रिसोर्स ग्रुप का कोई ये भी नहीं है. Let's say I'm going back to my temp वाला रिसोर्स ग्रुप, ECS2 availability zone. ठीक है, now I'm going to put it in zone 1. When I'm skipping all these things, guys, don't worry about it. We are going to cover everything. As of now, we are on the basic page, तो हम basic को ही cover कर रहे हैं. What did I miss? So here it is, guys. I can add a machine, a new machine to availability zone, like we can do that in availability set. Next question, can I add an existing machine? ये तो हम new machine कर रहे हैं, right? Can I add an existing machine to availability zone? What do you think? I hope you're getting the difference of the question, right? एक है जो मैं नया machine बना रहा हूँ, and at the time of creation, yes, I can add that. Obviously, वो मैं availability set में भी कर सकता हूँ. Can I add an existing machine to availability zone? Can I do that? Yes, I think it is yes. Yes. Okay, let's leave it to you guys then. I will leave that question also. That can I add an existing machine to availability zone? Again, whenever you say yes, no, please come up with article or something, some steps, etc. Okay, because first question was already answered by Razak. So this question, I leave it up to you guys. That you have to add an existing machine to an availability zone. Is it possible or it is not? While we are creating a virtual machine, and if there is a region which doesn't allows availability zone, then that existing machine cannot be added to an availability zone. Of course it cannot be. Forget that. If you're creating it in two different regions, both regions support availability zone, still they cannot be in same availability zone. आपका ईस्ट यूएस का अवेलेबिलिटी जोन अलग है और वेस्ट यूएस का अवेलेबिलिटी जोन अलग है, राइट? तो आपने एक मशीन ईस्ट यूएस के अवेलेबिलिटी जोन में रखा है और दूसरा मशीन वेस्ट यूएस के अवेलेबिलिटी जोन में रखा है, तो इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू. एक ही रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में जब रख रहे हो ना, तभी वो आपके लिए हाईली अवेलेबल है. जिस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन नहीं है वो तो उसमें तो होगा ही नहीं.
बट से कि इस तरह से एक और रीजन है आपका यहाँ पर जिसमें अवेलेबिलिटी जोन है, राइट। पर आप बोल रहे हो कि आप एक मशीन यहाँ रखना चाहते हो और दूसरी मशीन लेट्स से यहाँ पर 3 डेटा सेंटर्स है, okay, and you want to keep second machine here. This is not availability zone. You are going out of zone already. You're going out of region. You have to be in same region, and then you have to select availability zone. Then only your availability zone feature is working. Is it clear, guys? Did I confuse you? Did you understand what am I trying to say here? Yes, yes, understood. If this is East US, which supports availability zone, and this is Central India, this also support. But you will not keep your machine, one machine here and second machine here. This is not availability zone. This is something else. We are going to learn that later. Availability zone में एक मशीन यहाँ पर, दूसरी मशीन यहाँ पर, तीसरी मशीन यहाँ पर. Why? Because इन machines के बीच में database sync होना है, guys. Remember one thing. जिस machine बनाने से कुछ नहीं होने वाला है. If you have 50 machines, उनके बीच में data sync होना है. Even if it has one data source, उसको भी sync होना है. Application को sync होना है. There are many things. We are going to learn that later. So you cannot have one machine here and another machine here. Clear? सेम रीजन में होनी चाहिए ना. Yes. And one more question, if suppose we have a machine in availability set, and if we want to move it to availability zone, then is it possible? Okay, I'll leave that up to you guys again. वो भी question मैं add कर देता हूँ. If you don't get it, I will answer it. Don't worry. I have written the question. But when you start searching that can you add an existing machine to availability zone, आपको इसका आंसर वैसे ही मिल जाएगा. If not, now just remind me in the next session. I will immediately answer that. Right? So this is homework for you. That can you add an existing machine to availability zone, or can you add an existing? It's the same thing, right? What you are asking कि availability set से निकाल कर उसको availability zone में डालना है. So you'll have to search how to remove a machine from availability set. Can you remove a machine from availability set? Let's answer. अभी answer कर लेते हैं, छोड़ो. Can you remove a machine from availability set? We answered that already, actually, didn't we? This machine, these are in availability set. Or let me go to availability set. Again, guys, I'm giving plain answers. I'm not talking about the workaround. ये वो सब बहुत कुछ होता है. Workaround के नाम पे बहुत कुछ होगा. Yes, anyway, can I delete a machine from availability set? Single machine. Can I remove it? Yeah. No, we can't remove it. No, We we cannot. can't. So I hope your We can question move is it, I answered. guess. अगर आप निकाल ही नहीं सकते हो तो availability zone तो में वहाँ add पे कहाँ हाँ, से करोगे? correct, Right? correct, got it. Now talking about the existing machine, you guys have to search about it. कि existing machine को आप ये कैसे करोगे? Now look at this. ये तीन एक साथ बन गई थी, but ये चौथी वाली हमने बाद में बनाई. ठीक है. Now is this, will I call it an highly available application? ये चार सर्वर को मिलाकर, I mean ये फोर्थ सर्वर जो है, is it a part of this availability zone? No. No, No, right? क्यों? No. क्योंकि इसको मैंने That's the different, USD. हाँ. So now, Different Different region. region में है वो. right, different region में है. Region It's of no use. Sorry. Did someone say region change? Okay. So now let me try creating another machine in same region, East US 2. Right? Our existing machines are in East US 2, right? Because we have 5 minutes, so वो practical भी कर लेते हैं. Let's not keep it unanswered. ये हमारा temp East US 2. And then let me check. East US 2. Availability zone, this one. And I'm selecting this time manually, zone 1. Or let's, what we're trying to do is create a machine and then later we want to add that.
We want to see if that is available, if that is possible, right? क्योंकि यहाँ पर मैं select कर रहा हूँ तो ये तो at the time of creation already select हमने कर लिया ये चीज already. एक machine we can add. I just have to make sure that I'm using the same virtual network. Don't worry, virtual network का topic जब आएगा, I will explain it to you in detail. Virtual network is very crucial, guys. Please make sure you start you start going through those videos which I have sent before we start our networking topic. Network topic में काफी लोग छोड़ देते हैं. They don't understand it well. Okay, so this machine is being created. Meanwhile, if you guys have any doubts, any questions, please do ask. Meanwhile, in next session, guys, what we are going to do is in इसके break के बाद वाला session, we are going to, before we go to the next option, यहाँ से जो next option है, while creating, we will just quickly check these options. एक session इसको dedicate कर लेते हैं. ये सारे options क्या है and what is quota, because that will help you. अब जब machines वगैरह आप बनाने वाले हो तो ये options काम में आएंगे और quota जो है वो एक चीज काम में आएगी. So we are going to learn that in next session. We still have 2 minutes left. Machine is being created. If you guys have any doubts, please ask. Suppose we are creating any virtual machine, and at that time we are selecting the availability zones 1, 2, 3. So in the beginning, we have created that 3 zones. The same zones we are using for upcoming new machines. First question, are we creating a zone like in availability set? मुझको availability set का नाम देने का option मिला था. उसमें कितने fault domain Yes, sir. होगी कितने? Are we creating any zone? Default, we are getting the options over there. Are we creating it or are we just No, is it we are not creating. You are Yes. selecting. Yes, तो zone 1 same- सबके लिए zone 1 है. Yes. Yeah. It's not So only for next you. time, ये zone 1 Yeah. आपके लिए भी zone 1 है, मेरे लिए भी zone 1 है, सबके लिए zone 1 है. This is Okay, created by alright. Azure. So next time when you select zone 1, by default यहीं पर आना है उसको. Okay, so next it? machine automatically will get to If you select zone 1. Yeah, You zone 1 have select. you have that liberty. You can select zone 1 में जाएगी, zone 2 में या zone 3 Two में. inch, zone But the three. moment you say zone 2, तो यही उसका zone 2 है, सबके लिए यही zone 2 है. Okay, alright. Clear? So it's by default zone 1 and zone 1, zone Yes. 2 and zone 3. Yes. Okay. Yes, guys. Any doubts? Any questions? We have 1 minute left. We'll take a break of 5 minutes. Meanwhile, आप लोग भी search करो that this machine which we are creating, existing machine, इसको availability zone में add कर सकते हैं या नहीं कर सकते. We'll resume at 12:35. Right? Machine बन गई है. If I go here, availability and scaling, I do not see any scaling. I do not see any availability set, and I do not see any availability zone. So can I add this machine to my existing availability zone? Yes or no? Please look for that. We'll rejoin in 5 minutes, 12:35. See you guys.